Yesterday we were discussing the oblique impact of two particles. Now, in order to solve the problems involving oblique impact, the number of unknowns are going to be 4. That is, the magnitude of final velocity of both these particles are unknown to us as well as their direction. So overall, there are going to be 4 unknowns. It means that in order to solve this system, we need at least 4 equations. So वो 4 equations कहाँ से आती थी? Just a quick review. Equation number 1 जो है, we are going to get equation number 1 by applying the conservation of momentum principle on the system of particles along the line of impact. The second equation is going to come from the coefficient of restitution equation. So these two equations are going to give you the values of Vax2 as well as Vbx2, that is the components of final velocities of both these particles along the line of impact. Now, in order to find out the remaining two components, that is Vay2 and Vby2, we are going to apply the principle of impulse and momentum on each particle alone along the plane of contact. So this will give us the remaining two components Vay2 as well as Vby2. Once we have found these 4 components, then we will be able to find the velocities Va2 and Vb2 as well as theta2 and phi2. So these are the 4 steps that are required for solving any problem relevant to oblique impact. इसमें कल स्टेप नंबर 3 और 4 के हवाले से आप में से काफी लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस किए थे. बेसिकली स्टेप नंबर 3 और 4 में हम कर क्या रहे हैं कि जब भी हम कंसीडर करते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट को ड्यूरिंग द इंटरैक्शन या ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, जितना भी डिफॉर्मेशन या रेस्टिट्यूशन इंपल्स है, दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली. तो जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, सपोज आप पार्टिकल ए को कंसीडर करें, तो इस पे जितना भी इंपल्स एक्ट कर रहे हैं, बेशक वो रेस्टिट्यूशन इंपल्स हो या डिफॉर्मेशन इंपल्स हो, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग एक्ट कर रहे हैं. जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके अलोंग चूंकि कोई इंपल्स एक्ट नहीं कर रहा, सो देयरफॉर देयर शुडंट बी एनी चेंज इन मोमेंटम इन द पार्टिकल्स change in momentum in the particles along the plane of contact. It means कि जितना उसका momentum collision से पहले था along the plane of contact, वही collision के बाद भी रहेगा. यही वजह है कि आपके पास Vay1 should be equal to Vay2 या Vby1 should be equal to Vby2 आएगा. So these were the 4 steps which we discussed yesterday in order to solve any problem relevant to oblique impact. We did solve one example as well, which was there, this example 15-11. आज जो है वो हम example के बजाय exercise का problem एक solve करेंगे, and then we will move on to the dynamics of a rigid body. Okay, starting with problem 15-79, you have a particle which is this ball traveling at a speed of 10 meters per second towards the right, as shown to you in the figure. Then you have another particle which is this block B, and it is traveling down the incline with a speed of 1 meter per second. The ball strikes this 6 kg block as it is traveling down the incline. If the coefficient of restitution between the ball and the block is 0.6, you need to determine the speeds of the ball and the block just after impact. Also, what distance does B slide up the plane before it stops? The coefficient of friction between the block and the plane is given to you as 0.4. So at the time of collision, अगर हम सिचुएशन देखें तो आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि ये आपके पास वो ब्लॉक है, एंड दिस इज द बॉल विच इज स्ट्राइकिंग दिस ब्लॉक. सो एट द टाइम ऑफ कोलिजन, द लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, सो दैट लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी दिस लाइन विच इज शोन टू यू बाय द ब्लू लाइन. So this is going to be the line of impact, जिसको मैं LOI से represent करता हूँ, whereas the plane of contact is going to be this line which is being shown to you with the yellow line. So these are the two axes which are going to be used for analysis of oblique impact. One is the line of impact which is shown to you with the blue line. Line of impact कैसे आपको मिलती है? At the time of collision, आप दोनों particles के mass centers को join करते हैं, तो you are going to get the line of impact. Plane of contact क्या होता है? It is the line which is being defined perpendicular to the line of impact at the time of collision. So ये line of impact और plane of contact आपने define कर दिया. Particle A was traveling with a speed of 10 meters per second at an angle of 20 degrees with respect to the line of impact, whereas particle B was traveling with a speed of 1 meter per second along the line of impact. So first of all, is it a case of central impact or oblique impact? Oblique impact. Oblique impact. Why it is oblique impact? Because although particle B was traveling along the line of impact, but particle A was traveling at an angle of 20 degrees with respect to the line of impact. तो oblique impact हम define किस तरह करते हैं कि अगर एक या दोनों particles line of impact से किसी angle पर travel कर रहे हो before collision, तो then that type of collision is termed as oblique impact. तो यहाँ particle A जो है वो
एंगल पे ट्रेवल कर रहा है बिफोर कोलिजन लाइन ऑफ इम्पैक्ट से, तो इसलिए हमारे पास ऑब्लीक इम्पैक्ट हो गई है. सो इफ इट इज अ केस ऑफ ऑब्लीक इम्पैक्ट, देन वी नीड टू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ oblique impact for the analysis of this problem. So in step number 1, what we are going to do is we are going to apply the conservation of momentum principle on the system along the line of impact. What is the initial momentum of particle A along the line of impact? Uh, 2 into 10 cos 20. So the line of impact आपकी define हो रही है, which is this particular line, and we are taking the positive axis up the incline. So the initial momentum of particle A is 2 into 10 cos of 20. Positive, negative? Positive. Positive होगा. So 2 into 10 cos 20 is going to be the impact, is going to be the momentum of particle A along the line of impact. What about particle B's momentum? Minus 6 into 1. Okay, minus 6 into 1 या 6 into minus 1, whichever way आप इसको लिखना चाहें. So this is going to be the momentum of particle B before impact, and the right side of this equation says that MAVA2, which is 2VAX2 plus 6VBX2. So this would be your equation number 1 in terms of VAX2 and VBX2, which you have found by applying the conservation of momentum principle along the line of impact. I hope कि जो मैं लिख रहा होता हूँ वो visible है आप लोगों को, ये equation number 1. Yes, sir, visible. Okay, now in step number 2, what we are going to do is we are going to apply the coefficient of restitution equation along the line of impact. The coefficient of restitution for this collision is given to you as 0.6. So 0.6 should be equal to VBX2. So VBX2 minus VAX2 divided by VAX1, which is 10 cos of 20 minus 1. So this is going to be our equation number 2, which is being written for coefficient of restitution along the line of impact. Now the important thing here to note is कि अक्सर लोग, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं. ओरिजिनल फार्मूला में देयर इज ऑलरेडी अ नेगेटिव साइन, एंड सिंस द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी बिफोर इम्पैक्ट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सो आपने वो -1 जो है वो डालना है, माइनस का साइन वहां भी डालना है. सो दिस माइनस माइनस इज गोइंग टू बी taken as positive. So you have got two equations. Unknowns भी आपके पास दो ही हैं इन equations में. So once you solve these two equations, the unknowns would comes out to be VAX2 would comes out to be minus 3.079 meters per second, whereas VBX2 would comes out to be 3.159 meters per second. So these are the velocities of these particles A and B just after impact, the x component or the component of these velocities along the line of impact, because line of impact को हम generally x axis कहते हैं और plane of contact को हम generally y axis से represent कर रहे होते हैं. यहाँ तक clear है हर एक को? Yes, sir. Okay, what should be our step number 3? Velocity after collision along y-axis. Okay, so in order to find out the velocity after collision for y-axis, हम करते क्या हैं कि हम individual particle A और B को consider करते हैं. Since there is no impulse acting on any of these particles along the plane of contact, so the momentum of the system would remain same, momentum of the particle would remain same along the plane of contact. So applying the principle of impulse and momentum on particle A and B along the plane of contact, VA y2 should be equal to VA y1, and what is that V? That is going to be equal to 10 sine 20, isn't it? Yes, sir, negative. But with a negative sign. So 10 sine 20 with a negative sign, it will give you the value of minus 3.42 meters per second. What about VBY2? 0. Why 0? Still no component along.
That's correct. So since before collision, particle B was traveling along the line of impact, so after collision, it would travel back along the line of impact only. आपके पास particle B का जो है वो plane of contact के along कोई component नहीं आएगा. Okay, if we take a look at if we take a closer look at the components of VA, that is VA X2 and VBY2, VAX2 and VAY2, दोनों components negative आए, isn't it? Yes, sir. Okay, अगर दोनों components negative आए, it means के किस quadrant में ये VA2 lie करेगा? The third quadrant. It means that it is going to lie in the third quadrant. So अगर मैं impact की बात करूं और मैं थोड़ी सी खाली जगह देख रहा हूं. Okay, अगर मैं impact की बात करूं, so आपके पास ये वो एक्सिस थी, इंक्लाइन वाली एक्सिस, ये आपके पास वो पार्टिकल B था और ये आपके पास पार्टिकल A है एट द टाइम ऑफ कोलिजन. सो आफ्टर कोलिजन जो आपके एक्सिस बन रहे थे, दोज एक्सिस वर, दिस वाज द line of impact and this was the plane of contact. So it means के VA2 is in third quadrant. It means कि वो किस तरफ मूव करेगा, वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा. मूव करके वो कहाँ किस चीज से टकराएगा? प्लेन से. वो इंक्लाइन प्लेन से टकराएगा. तो अगर मैं आपको इस इंक्लाइन प्लेन का ई दे दूं, यानी अगर मैं फर्दर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि इसी में इस इंक्लाइन प्लेन का ई दे दूं, तो यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल ए आफ्टर कोलिजन विद द इंक्लाइन प्लेन. कर सकते हैं? यस सर. वो भी सेंट्रल इम्पैक्ट होगा, ऑब्लिक इम्पैक्ट होगा? सर वो ओब्लिक होगा क्योंकि वो एंगल पे उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना सर. दैट्स करेक्ट. सो इट इज आल्सो अ केस ऑफ ऑब्लिक इम्पैक्ट. और उसके बाद हो सकता है ये यहाँ से प्रोजेक्टाइल बना के आगे की तरफ जा रहा हो और आप जो है वो आपसे कहा जाए कि प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके हिट करता है, वो फिर प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो पार्टिकल ए तो जो है वो इस तरह रिबाउंड हो जाएगा. व्हाट अबाउट पार्टिकल बी? सर उसकी और डे सेलेक्ट हुआ है, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो गई है. पार्टिकल बी जो है वो रिबाउंड होगा और वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा, इजंट इट? यस सर. ओके, सो पार्ट 2 पे आ जाएं. यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बी स्लाइड अप द इंक्लाइन बिफोर इट स्टॉप्स. सो हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन दैट डिस्टेंस? एनी आइडिया? सर फ्रैक्शन है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यूज नहीं कर सकते, वर्क एनर्जी भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो चूंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट डिस्टेंस एस, you can not use conservation of energy principle because force of friction is being involved here. So चूंकि force of friction involved है, so it means कि आप principle of work and energy का इस्तेमाल करेंगे. So what is that principle of work and energy? आज का क्विज भी आपका उसी से है, तो एक तरह से चले आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. मैं कहता हूँ कोलिजन के बाद ये डिस्टेंस s तक मूव करेगी, तो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी, दैट प्रिंसिपल सेज दैट द initial energy, kinetic energy of block B after collision plus sum of work done by all the forces in moving this block B from position 2 to position 3 should be equal to the final kinetic energy of the block. Isn't it? यही है principle of work and energy. Yes sir. Okay, what is the initial kinetic energy? It is half m 3.159 जो कि आपकी वेलोसिटी आई थी कोलिजन के बाद वाली, उसको आप स्क्वायर कर लेंगे. व्हाट अबाउट T3? जी, क्योंकि जब ये मैक्सिमम ऊपर जा चुका होगा, it is going to stop momentarily, so T3 should be equal to 0. As far as summation U 1 to 2 is concerned, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएं कोलिजन के बाद से लेके स्टॉप होने तक, तो कौन सी फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रही हैं? वन इज द वेट, द अदर वन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द थर्ड वन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. यही तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी इस ब्लॉक पे. Okay, so from these three forces, which of them are going to contribute towards work done? Sir, friction force करेगा, component of weight करेगा. So UW आपके पास आएगा और UFF आपके पास आएगा. These are the two forces that are contributing towards work done. What is the work done due to weight? Can you identify it from the figure? Yes sir. Sir, वो y component of weight into s. W into S sin 20.
यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव क्योंकि ऊपर जा रहे हो, वेट नीचे है। So weight is acting downward, the vertical component is upward, so minus W into S sine 20. As far as the friction work is concerned, it is going to be mu NC into S. Positive, negative? सर नेगेटिव। तो फ्रिक्शन की वजह से भी आपके पास वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा. हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमिन दिस NC? सर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने वाला हूं नॉर्मल एक्सिस along y axis जो कि आपकी perpendicular to the incline है. So NC should be equal to WB कितना cos 20 sin 20. सर cos 20. So NC is WB cos 20. So in this equation, the only unknown thing here is S. So once you solve it, S would comes out to be 0.708 meters or 708 millimeters आपके पास S आ जाएगा. So I hope that this point is clear to all of you. किसी का कोई क्यूरी रिगार्डिंग प्रॉब्लम 15-79? नो क्यूरी? नो सर। ओके चले, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. शुड दैट ब्लॉक रिमेन स्टैटिक एट दैट पोजीशन और इज इट गोइंग टू मूव डाउनवर्ड? हाउ यू आर गोइंग टू जज इट? जी अब्दुल्ला लियाकत, आवाज आ रही है? यस सर। एक मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि चलें ब्लॉक को मोमेंटम, ब्लॉक को इम्पल्स या इम्पैक्ट मिला सर जो काइनेटिक स्ट्राइक की वजह से, जिसके नतीजे में उसने 0.708 मीटर्स अप द इंक्लाइन मूव किया. नाउ shall the block would remain stationary at that point or is it going to again move downward? Anyone volunteer जो जवाब देना चाहे? Can you hear थोड़ी देर me? बाद रुक जाएगा। थोड़ी देर बाद रुक जाएगा? नहीं, मेरा रुक तो आपसे सवाल यही है. रुक तो गया वो ऊपर जाने के बाद 0.708 मीटर्स कवर करने के बाद, लेकिन क्या वो वहां रुका रहेगा या नीचे की तरफ आएगा? सर वो हम निकाल सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेट का जो कंपोनेंट है उस डायरेक्शन दैट्स में। करेक्ट. अगर मैं आपसे कहूं कि कोफिशिएंट कौन सा फ्रिक्शन का, यही कोफिशिएंट यूज करेंगे? स्टैटिक स्टैटिक कोफिशिएंट. तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है और वेट का कंपोनेंट आप निकाल लेंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इनको कंपेयर कर लेंगे. अगर तो वेट का कंपोनेंट स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो द ब्लॉक इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड. अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड वेट के कंपोनेंट से ज्यादा है तो देन द ब्लॉक वुड रिमेन स्टेशनरी एट दैट पॉइंट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलें, so with this I hope कि dynamics is clear to all of you. डायनेमिक्स के आपने सबसे पहले अगर हम देखें, हमने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल से. उसके बाद फिर हमने काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल पे आए और हमने काइनेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल के डिफरेंट मेथड्स देखे, जिसमें हमने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट किया, फोर्स एक्सीलरेशन मेथड. देन वी डिस्कस द वर्क एनर्जी मेथड्स एंड देन फाइनली वी डिस्कस द इंपल्स एंड मोमेंटम मेथड. सो ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमने इसमें इम्पैक्ट एनालिसिस भी देखी. नाउ द डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल और डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल, दैट इज काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, आर बोथ कंप्लीटेड. From this point onward, we are going to move towards the rigid body dynamics. To chapter number 16, which is planar kinematics of a rigid body. सबसे पहले तो हम इस टॉपिक की, ये जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें एक वर्ड आया है प्लेनर. इससे क्या मुराद है? एनीवन वॉलंटियर जो डिफाइन कर सके व्हाट इज प्लेनर मींस हियर? अलोंग अ प्लेन। So the body is constrained to move within a plane, यानी स्पेस में 3D में नहीं हो रहा, मोशन सारे के सारा प्लेन में हो रहा है. सो पहली बात तो ये कि चैप्टर 16 जो है इट इज रेलेवेंट टू प्लेनर मोशन, यानी आपके पास जो रिजिड बॉडी होगी इट इज गोइंग टू मूव इन अ प्लेन ओनली रादर देन इन अ स्पेस. ओके, द सेकंड थिंग व्हिच वी नीड टू डिस्कस हियर इज काइनेमैटिक्स. व्हाट डज काइनेमैटिक्स मींस? आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं काइनेमैटिक्स का.
जी एनीवन वॉलंटियर जो कि काइनेमेटिक्स डिफाइन कर सके. So the study of motion without the study of forces that cause it. That's correct. So the study of motion without regard to the forces that are acting is basically termed as kinematics. Okay, the third thing is rigid body. How do you define a rigid body? सर जिसके पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं होता जब एक फोर्स उस पर अप्लाई की जाए, यानी कि डिफॉर्म ना हो वो. Okay, so a rigid body is a body that is considered to be incapable of any deformation. So अगर हम इन तीनों चीजों को मिलाएं, planar kinematics of a rigid body, so this chapter will deal with the motion of a rigid body without taking into account the forces which are acting on that rigid body. In other words, we are going to simply relate the displacement, velocity and acceleration of a rigid body without regard to the forces that are actually acting on that rigid body, causing that rigid body to move. So the topics which we are going to cover in this chapter are flashed on the slide. That is, initially today we are going to cover these three topics, probably these three topics. The first one is what are the types of planar motion which a rigid body can undergo. Then we are going to discuss each and every motion one by one. First of all, we are going to discuss the definition, and then we are going to develop some mathematics. Then, inshallah, in next week onward, we are going to cover probably the velocity analysis. In order to perform the velocity analysis, there are two different methods. One is the relative velocity method, using the relative velocity equation, जो already आपने पढ़ी है. The other one is the instantaneous center method, which is a new thing to you. And then finally, we are going to wrap up this chapter after maybe 2.5 weeks with this topic, which is the acceleration analysis of a rigid body. So probably this is going to be the last complete chapter जो कि हम अपने कोर्स में शामिल कर रहे होंगे, प्लेनर काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी. जहां तक ताल्लुक काइनेटिक्स का है रिजिड बॉडी की, तो उसके हवाले से आपको थ्योरी में सारी बता दूंगा. अगर प्रोबेबली टाइम बचा तो हम उसके एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट पार्टिकल और रिजिड बॉडी की काइनेटिक्स में कहाँ डिफरेंस आ रहा है वो आपको जो है वो बता दिया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, ताकि अगले किसी कोर्स में जब आपको रिजिड बॉडी की काइनेटिक्स की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट वो चीजें आपके लिए नई ना हो, आपने वो समझी हुई हो. ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द प्लेनर रिजिड बॉडी मोशन. When all particles of a rigid body move along paths which are equidistant from a fixed plane, then that rigid body is said to undergo planar motion. जिस तरह अभी बात हुई थी, planar motion क्या होता है? अगर वो पूरी की पूरी rigid body within a plane जो है वो move करे तो हम उसको कहते हैं planar motion. यानी वो उसी plane के अंदर complete अपना motion जो है वो कर रही हो. Now there are three different types of planar motion which a rigid body can undergo. The first one is translation, the second one is rotation, and the third one is जनरल प्लेन मोशन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स मोशन भी जो है वो कहते हैं. सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम डेफिनेशन देखेंगे इन तीनों टाइप्स ऑफ मोशन की, और उसके बाद फिर हम एक एक करके इनकी कुछ मैथमेटिक्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे. सो ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, द अदर वन इज कर्विलिनियर ट्रांसलेशन. इसी तरह जब हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन को भी हम दो डिफरेंट सिनेरियोज में जो है वो देख सकते हैं. द फर्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ दैट रिजिड बॉडी अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी पूरी की पूरी बॉडी अपने ही सेंटर एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रही है. और दूसरी रोटेशन किस तरह हो सकती है कि हम उस रिजिड बॉडी को किसी एक पॉइंट के अबाउट फिक्स करके रोटेट करा दें. पर दोनों सूरतों में हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे वो हम तफसील के साथ जो है वो देखेंगे. एंड द थर्ड वन इज जनरल प्लेन मोशन, जिसको कॉम्प्लेक्स मोशन भी कहा जाता है. इसको थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर इसकी मैथमेटिक्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे. ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ मोशन विच इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या होती है? Translation occurs if any line segment on that rigid body remains parallel to its original direction during the motion. कि मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक rigid body है, अगर during motion the rigid body is said to undergo translation if any line segment on that rigid body maintains its original orientation. यानी अपना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका आपसे कहूँ कि ये एक रिजिड बॉडी है जो कि ट्रांसलेट कर रही है, इसका कोई भी मैं लाइन सेगमेंट पिक करूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन सेगमेंट है, सो दिस लाइन सेगमेंट वुड मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन, ये अपना एंगल चेंज ना करे, तो देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशन. अब ट्रांसलेशन जो है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. One is rectilinear translation, the other one is curvilinear translation. Rectilinear translation क्या होती है? When the paths of motion of for any two particles of this body are along equidistant straight line. कि मैं आपसे कहता हूं कि आप इस rigid body के दो particles consider कर रहे हैं. One is this particle A, the other one is this particle B of this rigid body. So if the two particles
जिनके पास को आप अगर ट्रैक करें और ये पार्टिकल्स इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइंस बना रहे हो, तो देन दैट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज बेसिकली टर्म्ड एज rectilinear translation. However, if the path of motion of these two particles makes a curved line as shown to you in the second figure, so then that type of translation is basically termed as curvilinear translation. So this is the case of rectilinear translation. This is the case of curvilinear translation. In both the cases, आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट जिसको आप पिक करते हैं, इट शुड मेंटेन इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन. इसका एंगल चेंज नहीं होगा. जो भी आप उसकी ओरिएंटेशन पिक करेंगे, वो बेशक स्ट्रेट लाइन हो या वो किसी एंगल पे पड़ी हुई हो, वो अपना स्ट्रेट लाइन या एंगल मेंटेन रखेगी थ्रू आउट मोशन. तो देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन. सो आई होप दैट ट्रांसलेशन और इसमें रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर ट्रांसलेशन की डेफिनेशन हर एक को क्लियर है. यस सर. Okay, the second type of motion which a rigid body, the second type of planar motion which a rigid body can undergo is rotation. अब rotation की जिस तरह मैंने कहा था, दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं. One is rotation about a fixed axis, जिस तरह यहाँ आपको शो किया गया है. So when a rigid body rotates about a fixed axis, all the particles of that rigid body except those which lie on the axis of rotation move along circular path. So अगर आपको ये rigid body शो की गई है और ये अपनी center axis के about rotate कर रही है, it means के हर पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर मोशन जो है वो कर रहा है. इसके मुकाबले में रोटेशन का एक सेकंड केस भी बन सकता है कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सिंपल रिजिड लिंक है और आपने इस रिजिड लिंक को इस पॉइंट के अबाउट जो है वो फिक्स कर दिया है. अब जब आप इसको इस पॉइंट के अबाउट फिक्स कर देते हैं, अगेन ऑल द पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी आर गोइंग टू रोटेट विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स पॉइंट. सो दोनों आपके रोटेशन के केसेस बनते हैं, लेकिन राइट साइड पे जो रोटेशन का केस है, इट इज रोटेशन अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस, whereas the left side पे जो आपको केस शो किया गया है, that is rotation about some fixed point. दोनों सूरतों में all the points on the rigid body except those which lie on the axis of rotation for the right case or the point which is fixed in the left case, बाकी तमाम points जो है वो circular motion कर रहे होते हैं with respect to the axis of rotation और with respect to the point जो कि आपका fixed होता है. So whenever a rigid body rotates, all particles of the rigid body are going to have circular motion. Is the second type of motion clear to all of you? Yes sir. Okay, the third type of motion is the general plane motion, या इसको कहीं टेक्स्ट में आप देखेंगे इसको कॉम्प्लेक्स मोशन भी कहा गया. इस बुक में तो नहीं, लेकिन अगर कोई और बुक आप उठाएंगे तो मे बी उसको जनरल प्लेन मोशन के बजाय कॉम्प्लेक्स मोशन कहा गया. Now what is this complex motion? Whenever a rigid body is subjected to general plane motion or complex motion, it undergoes a combination of translation as well as rotation. So that rigid body undergoes simultaneous translation as well as rotation. The translation occurs within a reference plane, whereas the rotation occurs about an axis perpendicular to the reference plane. For example, मैं आपसे कहता हूँ कि just a second, मैं ये फिगर साइड पे कर देता हूँ. Okay, now let's say कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास एक rigid body है, which is this rigid link shown to you here. So I hope कि ये rigid link जो मैंने ड्रॉ किया है ये visible है हर एक के. Yes sir. Okay, so at one instant, the position of the rigid link is shown to you as this brown color link shown to you. At some other position, आपके पास यही rigid link जो है वो इस तरह जो है इस position पे आ जाता है. So from its current location, which is shown to you as brown, to the purple location, the rigid body has undergone general plane motion. That is, इसमें अपनी करंट लोकेशन से उस लोकेशन तक जाते जाते ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों हुई है. हम इस जनरल प्लेन मोशन की एनालिसिस कैसे करते हैं कि हम इस साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन और रोटेशन को ब्रेक कर लेते हैं इनटू इट्स ट्रांसलेटरी कंपोनेंट. हम कहते हैं पहले ये रिजिड बॉडी पूरी के पूरी जो है वो ट्रांसलेट हुई है बाय दिस अमाउंट व्हिच इज शोन टू यू, एंड देन ये पूरी के पूरी रिजिड बॉडी रोटेट हुई है अबाउट सम बेस पॉइंट एट सम एंगल थीटा. सो simultaneous translation and rotation को we have broken down into its translatory and rotational component, और फिर इसकी एनालिसिस हम ट्रांसलेशन और रोटेशन को मिला के करते हैं और आखिर में वेक्टोरिकली इन तमाम चीजों को ऐड कर देते हैं. कैसे करते हैं वो तफसील के साथ आएगा जब हम इसकी मैथमेटिक्स जो है वो डेवलप कर रहे होंगे. For the time being, as far as the definition of general plane motion is concerned, general plane motion in a rigid body occurs when that rigid body undergoes a simultaneous translation as well as rotation. So simultaneous translation and rotation is basically termed as general plane motion. और जिस तरह भी बात हुई है, the translation occurs within a reference plane, कि ये जो आपका plane है इस plane के अंदर अंदर ये translation हो रही है, and the rotation occurs about an axis perpendicular to the reference plane. So ये वाली जो axis है which is outside this point, इसके about जो है वो rotation जो है वो हो रही होती है. So translation occurs within the reference plane, whereas rotation occurs about an axis perpendicular to the reference plane. So combination of translation and rotation would result in general plane motion.
So the definition is clear to all of you. Yes, sir. Okay, so these are the three types of planar motion which a rigid body can undergo. So starting with developing some mathematics relevant to translation first and then rotation and then general plane motion. So आज हम translation और rotation को थोड़ा सा देख लेंगे और इंशाल्लाह next week से फिर हम general plane motion की बात करेंगे जिसमें हम फिर velocity और acceleration analysis की बात कर रहे होंगे. Okay, now in order to understand the translatory motion, let us consider a rigid body which is subjected to either rectilinear or curvilinear translation. So first of all, let us consider a rigid body which is shown to you as this blue body. Let us consider any 2 points on this rigid body. For example, this is point A and this is point B, which may be any 2 points on this rigid body. कोई से भी 2 points हम select कर लेते हैं randomly, point A and point B. Okay, now in order to define the position of point A from some fixed reference, हम इससे पहले पोजीशन किस तरह डिफाइन करते थे? हम पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते थे. So in order to define the position of point A from some fixed reference, we have defined a position vector which is this position vector RA. Similarly, in order to define the position of point B from that fixed reference, we have defined another position vector RB as shown to you in the figure. Now, since both these position vectors RA and RB are being referenced from that fixed origin, तो वो तमाम चीजें जो fixed origin से reference की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? Do you remember chapter number 12? They are known as absolute things. So RA and RB are basically absolute position vectors. Absolute क्यों है? Because they are being referenced from some fixed origin. The third vector, which is this vector RBA, it is the relative position of B with respect to A. Because relative position हम क्यों कहते हैं? Because it is not being referenced from a fixed origin. Rather, point A would also be moving with respect to that fixed origin. तो आपका जो position of B with respect to A है, it is being defined using this relative position vector RBA. So completing this vector addition, this equation would become RB equal to RA plus RBA. Do you remember this equation? ये वही equation नहीं है जो हमने chapter number 12 में पढ़ी थी? Yes, sir. But in that chapter number 12, this equation was written for two different particles. Here, this equation is being written for two different points on the same rigid body. Point A and point B are basically two different points on the same rigid body, which is shown to you as a blue rigid body here. So the equation is same, but सिर्फ उसका context different है. वहां ये दो different particles के लिए लिखी गई थी. यहाँ ये एक ही rigid body के दो different points के हवाले से, दो different particles के हवाले से लिखी गई है. So this is the relative position equation being written for two different points on the same rigid body. RB equal to RA plus RBA. Okay, now in order to relate the velocities, हमने इस equation के साथ क्या किया था chapter number 12 में? कुछ याद है? जी, anyone student जो बता सके कि velocities के लिए इस equation के साथ क्या करेंगे? इसका time derivative. We are going to take the time derivative of this equation. So taking the derivative of each and every term of this equation, starting with d over dt rb. ये क्या बन जाएगा? d over dt rb. V dot B. It would become this vector which is vb. Similarly, if we take the time derivative of a, d over dt ra, आपके पास absolute velocity of a बन जाएगा. So v and vb here represents the absolute velocities as in the previous case. But now these are the absolute velocities of points A and B, which are the same points of a rigid body. अब थोड़ा सा इस तीसरी टर्म को बड़े गौर से देखें. It is d over dt RBA. सबसे पहली बात तो ये कि मुझे आप ये बताएं, डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं, सो मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव का फिजिकल मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ डेरिवेटिव? Change with respect to time. Change that has occurred in that quantity with respect to the time, यहाँ जिसके हवाले से हम करें था, और when delta t approaches to 0, यानी स्मॉल इंटरवल में कितनी एक चेंज आती है, इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं, isn't it? Yes. Okay.
RBA is a vector quantity. So इसमें जो चेंज आ सकती है वो या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है या इसके डायरेक्शन में चेंज आ सकती है. वेक्टर में यही चेंज होगी ना, या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा. Isn't it? ओके, अब जरा मुझे गौर से देख के बताएं कि इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 क्या RBA के मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है? आपकी आवाज काइंडली बहुत हल्की आ रही है, दोबारा बता दें. चेंज नहीं आ सकती. व्हाई? बिकॉज वी आर टेकिंग दिस एज अ रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी की हमने डेफिनेशन कैसे डिफाइन की थी? इट इज अ बॉडी विच इज इनकेपेबल ऑफ एनी डिफॉर्मेशन. सो इट मींस कि अगर इसके अंदर डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है तो RBA यानी A और B के दरमियान की जो पोजीशन अगर 5 यूनिट्स है, सो इट वुड रिमेन टू बी दिस 5 यूनिट्स थ्रू आउट. इट मींस कि मैग्नीट्यूड RBA जो है उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगी विद टाइम. इजंट इट? ओके, व्हाट अबाउट द डायरेक्शनल चेंज? क्या RBA का डायरेक्शन चेंज हो सकता है? जी, क्या RBA का डायरेक्शन चेंज हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? Since we are considering the translatory motion, तो translatory motion की हमने डेफिनेशन ही कैसे डिफाइन की है कि जिसमें ये रिजिड बॉडी अपनी ओरिएंटेशन जो है वो नहीं चेंज करेगी. तो अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी, इट मींस कि इसके जितने भी लाइन सेगमेंट हम कंसीडर करेंगे दे आर गोइंग टू रिमेन इन दैट ओरिजिनल ओरिएंटेशन. इट मींस के RBA में कोई डायरेक्शनल चेंज भी नहीं आ रही. सो ना इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ रही है, ना इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आ रही है. इट मींस dRBA over dt should be equal to 0, isn't it? और अगर dRBA should be equal to 0 है, it means कि जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे we are going to get VB equal to VA, और further differentiation would yield AB equal to AA. Now what does these two equations represents? These two equations represents that whenever a rigid body is undergoing translatory motion, whether it is curvilinear translation or it is rectilinear translation, in both cases, all the points on that rigid body are going to travel with the same velocity and acceleration. In other words, all those formulae of rectilinear kinematics of a particle which we have studied in chapter number 12 are equally applicable for a rigid body which is undergoing pure translatory motion. So this is the point which we are going to prove, that whenever a rigid body is in pure translatory motion, all the points on the rigid body will move with the same velocity and acceleration. So kinematics of a particle motion may be used to specify the kinematics of points, all the points which are located on the rigid body. वो तमाम फॉर्मूले, वो तमाम इक्वेशन जो आपने चैप्टर नंबर 12 में डेवलप की थी फॉर काइनेमेटिक्स ऑफ अ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन, वो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन एनी रिजिड बॉडी विच इज अंडर translatory motion. Is this point clear to all of you?